यूआई या यूआई का चल रहा था ना सर। क्या चल रहा था? यूआई का? यूआई, हाँ यूआई का। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, वो आप दिखा रहे थे ना, सिंक्रोनाइजेशन और वो। कस्टम एमडीएफ ऑब्जेक्ट कवर किया हम लोग? नहीं किया ना? नहीं किया सर। ओके ओके। सो ये पोजीशन मैनेजमेंट सेटिंग्स तो हाँ वो हो गया सर, उसमें चल पोजीशन रहा है। मैनेजमेंट सेटिंग्स ओनली उसमें ही चल रहा है ना? पोजीशन, हाँ हाँ ओके उसमें चल रहा है, पोजीशन मैनेजमेंट सेटिंग में ओके वो यूआई का चल रहा है, उसमें का सिंक्रोनाइजेशन का हो गया अपना। ओके ओके ओके, no problem. So to access the position management settings, you have to go to position management settings only. सर मुझे एक क्वेश्चन था। हम्म। एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरे एक फ्रेंड है, ओके। तो उसने मुझे पूछा, तो हम्म। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं पूछ रही ओके। हूँ। सब ऑल एम्प्लॉय को अगर एक लिस्ट में देखना है तो कैसे देखेंगे, कहाँ पे जाके? ऑल एम्प्लॉय को एक लिस्ट में देखना है। एक लिस्ट में? हाँ। और वो तो फिर आपको रिपोर्ट्स निकालना पड़ेगा, पूरे रिपोर्ट्स निकाल के उसमें देख पाओगे अच्छा, आप। अपना वो हुआ नहीं है ना सर अभी नहीं, तक? अपना अभी वो लास्ट है, रिपोर्टिंग विल बी द लास्ट सेक्शन, तो ओके एडाब्लू ओके को फाइन, तो बनाने के उसको मैंने पहले। बोला कि वो आई थिंक वो रिपोर्टिंग में आएगा। तो हम्म। मैंने ऐसे लॉजिक लगाया कि रिपोर्टिंग में ही वो आता है ना, सब ऑल या एम्प्लॉय सब पूरे डिटेल्स वगैरह। एम्प्लॉयज हाँ, डिपार्टमेंट तो वाइज, मैंने लीगल एंटिटी वाइज यू उसको कैन बोला, प्लॉट। मैंने ओके ओके उसको ओके। मैंने बोला कि वो उसमें नहीं आएगा, वो रिपोर्टिंग में आएगा, और वो मेरा हुआ नहीं है, तो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ कि कैसे ओके करना ओके है। ओके, नो प्रॉब्लम। वो लास्ट लास्ट में कवर करेंगे हम लोग पूरे एम्प्लॉय लिस्ट, ईच लीगल एंटिटी जितने भी है हेड काउंट्स विल बी हम्म फाइंडिंग इन रिपोर्टिंग हम्म। बेसिकली। ओके ओके सर। ओके। सो हम्म। यूआई कस्टमाइजेशन में ये हो गया, एट लोअर लेवल पोजीशन। कुछ डाउट्स है इसमें? ये क्लियर है ना? हाँ वो क्लियर है। ये लॉजिक। एंड देन ये भी मैंने बता दिया था, राइट? हाँ वो भी बताया आपने। इफ आई सेलेक्ट नहीं। यस, वर्कफ्लो जो पोजीशन के एंड पे लगाते हैं, इट विल एप्लीकेबल व्हाइल कॉपिंग द पोजीशन, ये बताया था ना? हाँ बताया था आपने वो। Okay, so basically, what is this meaning when I in the configure object definition, if I put configure any workflow routings, workflow routing बोल के एक सेक्शन रहता है, उसमें अपना खुद का वर्कफ्लो लगाता हूँ, अगर मैं इधर नो मेंशन करता हूँ, then while copying position this will not applicable, it will not respect means it will not, that this workflow will not applicable while copy position. Okay, you can ओके copy it without the workflow, this is the meaning. And then what is this meaning? Use company filter for positions in mss job only. For example, अभी कोई एक कंपनी है सपोज, इसका मतलब क्या है वैसे? यूज जस्ट अ सेकेंड, इसका मतलब क्या है? यूज कंपनी फिल्टर फॉर पोजीशन इन एमएसएस जॉब इंफॉर्मेशन। पोजीशन कहाँ पे आता है आपको? जॉब इंफॉर्मेशन में हिस्ट्री में आता है, राइट? हिस्ट्री एंड जॉब हाँ। इंफॉर्मेशन। ओके, यू कैन एबल टू सी द पोजीशन। सो पोजीशन यहाँ पे आता है, अगर आप जॉब इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहोगे भी, जो सपोज आई वांट टू चेंज दिस पोजीशन, नाउ आई विल बी सेलेक्टिंग, अगर मैं कुछ पोजीशन चेंज करना चाहूँ भी तो इट इज शोइंग मी द पोजीशन बेस्ड ऑन दिस लीगल एंटिटी। अगर सपोज अभी इसमें लीगल एंटिटी का डिटेल्स नहीं है क्योंकि रूल्स लगा हुआ है, सो अगर अगर मैं कोई और लीगल एंटिटी का एम्प्लॉय लिया, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक कार्ला ग्रैंड। ओके, इफ आई टेक अनदर लीगल एंटिटी एम्प्लॉय, if I want to edit this position,
Now if you see, the position will be different. Okay, वो इंडियन एम्प्लॉय था, ये एम्प्लॉय, तो बेस्ड ऑन लीगल एंटिटी these positions will get filtered. Means जो लीगल एंटिटी में जो पोजीशन है, that will get, if you want to show that position, then you mention yes. अगर आप नो करते हो, then सिस्टम में जितने भी पोजीशन है, it will get reflected. Got it? इसका मतलब समझ में आया? Okay, so suppose legal entity based on USA है, based on USA, you will be filtering that position. You will be seeing all those position related to Western USA. If Western India is there, why you are hiring an employee? If Western India में hire करते हैं, तो India के हिसाब से position होता है. That legal entity, what positions are there in that legal entity, it will reflect. Okay. If you select no, complete overall positions in the organization, irrespective of legal entity, will be displayed. Got it? It is controlled from here. समझ में? Yes. हाँ sir. And then you'll be having allow selection only of position that have to be hired in MSS job information and hire. Every time this should be yes. What is this meaning? If you only want to allow the selection of position that have status to be hired. For example, अगर आप जाके कौन सा भी position change करना चाहे, for example, I want to change this position. Randomly select any position. Randomly select any position. For example, ये analyst है. So ये analyst I have selected. So it is taking. Why it is taking? Because it is showing only those positions whose status is to be had. For example, if I go here and select manage position. Position कहाँ पे अपडेट करते हैं हम लोग? manage position में. If you go and see this position, if you go and see this position, you will be had to be had yes. Not only this, select any other position randomly. Assembly worker. Now if I check this position, it will show me to be hired as yes here also. So इसका मतलब अब तो clear हो गया होगा ना? What is this meaning? हाँ. Means it is, we are asking the system, means जिसका भी status to be hired है, means yes है basically, which are vacant. To be hired yes means vacant position, that is only to be showed in the job information. What happens if we select no? All occupied positions are also showed. Then your user will get confused. Got it? Yes sir. Because already occupied position पे दूसरा employee को hire नहीं कर सकते ना? If it is to be hired, then only you can hire it. जो पोजीशन ओपन है, तो वही इसलिए हम लोग यहाँ पे टू बी हायर्ड यस कर रहे हैं. तो वो जो वैकेंट है पोजीशन, जो क्लोज हो चुके हैं, अगर हम लोगों ने वो नो कर दिया तो वो क्लोज पोजीशन भी उसमें दिखा देगा. या अगर मैं जाके वो पोजीशन को टू बी हायर्ड मैनुअली नो कर दिया, then this will not appear in that list. Simple. तो बेसिकली ये टू बी हायर्ड यस पोजीशंस को ही बताएगा. अगर बाय मिस्टेक कोई यूजर वेकेंट पोजीशन मींस फील्ड पोजीशन वैसे भी नो बोल के बताता है व्हेन यू हायर एनी एम्प्लॉय. बाय मिस्टेक अगर कोई यूजर जाके इसको यस कर देता है, तो वो फील्ड, तो द पोजीशन इज फील्ड, इट विल शो, एंड इट विल, when I select this position, it will show an error. It is already vacant. It is already occupied बोल के error आता है. Then you might be wondering why it is happening, because somebody might have changed the position setting to yes in managed position. So इधर system vacant है नहीं है पता नहीं, yes ये category पे लेता है system. To be had for occupied position to be had to be no, for vacant position should be yes. So it can be a master data issue also. So you have to
means make user understand that whenever the position is to be vacant, it should be yes. Whenever the position is filled, it should be no. Okay, वो एक चीज देख लेना पड़ेगा. अगर वो मास्टर डाटा इज ओके, देन इट विल वर्क. और मास्टर डाटा इज प्रॉपर नहीं है तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगा. Got it? Got it, sir. Yeah. So display incumbent of parent position in hire, MSS job information and history. इसका क्या मतलब है? आपने एक चीज नोटिस की होंगी इन पोजीशन मैनेजमेंट, दिस इंक्यूबेंट ऑफ पेरेंट पोजीशन. अगर मैं इसको नो करके सेव कर देता हूं, देन व्हाट विल हैपन? लेट अस चेक. नाउ अगेन आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग द रिकॉर्ड. चेंज जॉब इंफॉर्मेशन है. See, directly start with position. किधर गया वो incumbent position? अभी एक से पहले था ना फील्ड. Do you remember? Yes. Yes. अब समझ में आया क्या है उसका मतलब. Whenever you want to see the incumbent of parent position in hire, job information, history, anything, whenever you are hiring an employee, changing information, then you have to select yes. वो field का मतलब क्या है? Now let us check. दिख रहा है इंक्यूबेंट ऑफ पेरेंट पोजीशन. इसका मतलब है ये सारे पोजीशन है, ये बेसिकली ये सारे पोजीशन लीगल एंटिटी में है कंपनी. नाउ हिज मैनेजर इज दिस, लेकिन ये मैनेजर के अंडर डायरेक्ट रिपोर्ट इस पोजीशन चाहिए मुझे टू सर्च इफ देयर इज एनी वेकेंट पोजीशन अंडर दिस मैनेजर. आई विल बी सर्चिंग दिस मैनेजर और फिर आई एम सेलेक्टिंग. अभी तो नो डाटा बता रहा है बिकॉज ये मैनेजर के अंदर डायरेक्ट पोजीशन कुछ भी नहीं है. इन केस इफ यू वांट to search or if you want to if you created any position under this particular manager, okay, position ऑफ चार्ट में जाके डायरेक्ट पोजीशन आप क्रिएट करते हो ये मैनेजर के अंदर. इफ यू वांट टू सी any position vacant here, then that position will be shown here based on his direct report is ये particular person is occupied to some parent position, right? Particular person, it is not reading person wise, it is reading position wise. ये particular person might be occupied in some position. So इसका position क्या है? You can check it. इसके record में जाके इसका position job information है. You can check and go and you can create one vacant position for testing and again come here and write his name here and then select this position. That position will be visible to you. Okay, just test that and let me know if it is happening or not. So that is the meaning. Okay. Okay. आ गया ना क्या बोला? हाँ. So basically, if you want to show that field visible, this is not controlled from succession data model. Succession data model अभी अपना next topic है जो field wise configuration है. This field is taken from here. You can't remove, hide anything this field in succession data model. It is controlled from here. Okay, this is standard field in SuccessFactors, so it is controlled from here. Okay. तो visible करना है नहीं करना है यहाँ पे होगा. Other fields you can able to manage to succession data model, but this field is controlled from here. And then you will be having show deactivate position option in termination screen. अगर आप means user को वो option देना चाहे, either you are a super admin, you can deactivate the position from going the position and make it inactive or something like that. Okay, you can do it. But if you want to give the authorization to user that the vacant position should no more be used and the user can deactivate the position, then
if you want to terminate this particular employee record, then you'll be finding, yes, a reason भर दिया बस से. If you come down, you will be finding deactivate position field, whether the position is to be deactivated or not. So if you want this field to be activated, you can just control it from here. Okay, deactivate position. Got it? If you don't want this field to be appear over here, for example, I'm just saving it to no. And then I'll be again coming to the termination record. Then you will be not finding the field. See? Got it? वो field को अगर visible करना है, then you have to mention yes if you want to give that authorization to the user. Okay. That's it. ये UI customization है. Okay, clear? Okay. Yes. This will be not much. जैसा मैं last class में बोला था, this will be not much troubling. This leave it as it is. This is whenever your employee goes on a long leave like maternity leave and so on. Okay. And these rules will be applicable. If you want to unassign the position, then right to return rule will be there. This is the standard rule. You no need to disturb. If you disturb it, if you mention no, basically decision is equal to always yes. If you mention no, then that particular person don't have right to return. Okay. This is same. Unassign the position, and if you are also letting the employee to go on global assignments. Okay. And then if the particular employee wants to come back to the same position, then the right to return, this is the standard rule. It should be decision is to be yes. Okay. So this will be not interfering with this rule until and unless required. Okay. This is what right to return. And then you'll be having transition period. What is this transition period? Any idea? No, sir. Okay, no problem. So suppose you for position end you are creating FT is 1 for the position. Okay. Position में FT you know, right? More than 1 it is not allowed to hire. FT is 1. Then what happen is when the employee resign, immediately that record is not terminated. You don't ask the employee to go. You ask the employee to serve the notice period. Okay, for 3 months, for 2 months. Okay. In that notice period, in the same position, some other employees to be hired. Then system will allow for time being for 2 employees to hire in the same position through this action. Transition period. Yes, period means it may be either months or days, not years, because notice period will not in years. Okay, either months or days. So how many days you want that particular? Suppose आज मैं resign कर दिया and I want to give KT to my what we say, my replacement, and after 2-3 days he or she might join. Okay, in the same position will be hiring that person. So system will allow for a particular time period. For example, if I mention three months, then after 3 months also, if the particular person is there, then it will show an issue. Till 3 months, system will allow us to, because within 3 months you'll terminate the employee. Okay, for sure. So how many months system should allow the 2 persons in a single position, though the FT is 1, will be decided here based on the time period, 3 months or 4 months. Okay, for this you can able to hire the employee in the same position. Okay. And then integration. This is related to recruitment module. For example, if any position is being vacant or anything, then they will be raising events. Basically, recruitment module people create job requisition, means based on the
vacancy, they'll be creating job info requisition. So all will be done here. These are nothing but rules, but it is relevant to recruitment module. It is basically recruitment to easy integration. Okay, so all this they will be coming, and here use recruitment management integration, then you have to mention yes. These all will be done by recruitment consultant, so no need to worry about this. Okay, okay. Okay. And then these are the standard things. You don't need to interfere about it. Import is nothing but if you want to importing the position lever, import is nothing but mass upload. So no need to touch about this until and unless required. These are the standard features. So we'll be generally not touching about it. These are about import. Import means anywhere you will be finding import means that is mass uploads. Okay. So basically we'll be using these many features if at all it is required. So this is all about position management settings. Got it? Or any doubts? Got it. Okay. Not it, sir. Yeah. Okay. So we have covered position management settings. So basically position management is done. Now as per syllabus, let me just open it. Okay, position management settings is done, which is nothing but comes under corporate data model only. So before succession data model starting, I will be letting you there is one important thing that you need to understand. I have told you about the custom MDF objects, you know how to create now. Okay. Now, Yes. what if you want that custom MDF object to be reflecting here in employee file? Do you know this? No, right? How to reflect the custom MDF object here as a portlet, okay, in employee files. So it will be similar like this portlet only. Suppose I want this. There are so many things they have. These are custom MDF objects only. Don't think it is a this standard post list. These are custom MDF objects only. Okay. Yes. So vaccination history, etc. So if I just want to create a new travel request, is there here? No, right? Suppose there is a travel requirement. Okay. Scenario is something like this. Let me open a notepad. Not notepad plus. It will again open the XML file, not this. This plain notepad. Okay. Okay. So suppose there is a portlet called travel request. And what all the details are required? Let us think of our own requirement. Travel request में क्या-क्या details रहेगा? Okay. One is effective date. या effective date को छोड़ो, सिर्फ travel start date. Okay. And next it is travel end date. Okay. Okay. And next travel form. अब यहाँ पे छोटा सा वो रहेगा कॉन्फ़िगरेशन. ट्रैवल फ्रॉम में आपको पिक लिस्ट असाइन करना है. पिक लिस्ट में क्या क्या लिखना है? वैल्यूज. एक 3-4 कंट्रीज के वैल्यूज देना है. वन इज हैदराबाद. ओके. वन इज पुणे. वन इज मुंबई. एंड another is think any another country, another city. Pune, Mumbai,
गुजरात, दिल्ली। हाँ दिल्ली भी लिख सकते हैं, दिल्ली। हम्म Okay, with these four हम्म countries in real time, whatever the country your branches are, you can include that if it this request come. Okay, ओके so travel from and travel to में भी सेम रहेगा. Okay, because इस ओके travel to में ऐसा नहीं कि दूसरे रहेंगे, सेम रहेगा pick list, same pick list. हम्म Okay, same pick list you can assign. और क्या रहेगा? Travel attachment means proof attachment something. Okay, for ओके travel. हम्म ये फील्ड भी रहेगी. इसमें आपको जस्ट हम्म अपने ब्राउजर से अटैच करना पड़ेगा, हम्म बस. तो उतना ही रहेगा या और कुछ? इतना काफी है ना? हाँ प्रूफ इसका अटैच. काफी। ओके, सो हम्म लेट अस जस्ट कंटिन्यू विद दिस. जस्ट अ सेकेंड. एक मिनट, एक मैसेज है. हम्म सो these are the requirements. So सबसे पहले what are the criteria to fulfill? सबसे पहले step 1. Okay, हम्म 1 is create an MDF object, of course, right? Without हम्म creating a custom MDF object, how can you fulfill it? हम्म So let us come by steps. MDF object. So कैसा create करेंगे MDF object? Now tell me where I have to go now to create custom MDF object. कहाँ पे? Configure object डेफिनेशन या ये पता चल गया ना कॉर्पोरेट डाटा मॉडल कहाँ से एक्टिवेट किया हमने? It was not visible before. हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेट डेटा मॉडल ना, तो Yeah. वो अपने हाँ वो परमिशन रूल्स में जाके if you want to check you can just check like this. परमिशन रूल्स में जाके कहाँ पे रहेगा? So we are into this system admin training. Okay, this is our role. ओके If you don't know what is your role, you can दूसरा तरीका बताया मैंने, व्यू यूजर परमिशन. ओके यहाँ पे जस्ट कॉर्पोरेट डेटा मॉडल मारो, समझ में आ जाएगा आपको कहाँ से ले रहा है. सर्च में import ओके export manage foundation objects as it is a foundation object. we पहले ये और इसका परमिशन नहीं दिए थे. only these two permissions were given. now I have given these two permissions. okay, somebody might have removed it. और ये नया सिस्टम है ना, तो not sure, by default I think they have not given these permissions. anything can happen. okay, so यहाँ पे manage foundation objects में जाके आपको देना पड़ेगा. परमिशंस में जाके कंट्रोल F करो, ढूंढने की जरूरत नहीं है. फाउंडेशन ऑब्जेक्ट मेंशन करो. फाउंडेशन, जस्ट टाइप फाउंडेशन OBJ, मैनेज फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स. ओके, यहाँ पे जाके आपको देना है. अगर आप ये रिमूव कर दोगे तो परमिशन चले जाएगा फिर से. ओके So let us concentrate on our requirement. कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में जाके अब बताओ कैसा क्रिएट करना है. लेट मी चेक.
create new Object object definition. definition, right? Hmm. First, code should not have any spaces, I've told, right? Yes, Travel right. underscore request दे दो. Effective dating. What should be done? Because we are Basic. creating an independent object, basic, right? Yes. And then API visibility should be editable. Okay. Hmm. Hmm. You can, this is depends on the client requirement. If you want configuration history, then complete history mention कर सकते हैं, else delete history mention कर सकते हैं. You have switched the auditing to track delete operations only. So basically this is for audit purpose. और audit Hmm. पता करना चाहे कि कौन कॉन्फ़िगर किया and all, you can just track it through here. Config complete history रख दिया, okay? Else delete history. Okay. The label will be like travel request. Description you can give anything. Sub version ये सब छोड़ दो, उसका जरूरत नहीं है. Sub user field, this is important, but we are not updating anything here. To do category, I will tell you where we'll be updating. Generic object, right? You have to mention every time this. To do category. Object category should be no selection because it is for all. So we are not categorizing anything like configuration and categorize anything. So let it be. Hmm. And then what we have to do? ये एक्सटर्नल कोड कोड से ही आप वहां पे लिंक कर पाओगे. टू मेक इट reflecting as a user, every time maintain the external code as whenever you want to link it in the front end. Okay, this you have to maintain it as user. सेव करने पे आपको यहाँ पे भी ये कोड आ जाएगा, मैं बताऊंगा. ओके, सो इधर आप खाली यूजर मेंटेन करके देन डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर. लेट इट बी इन एडिटेबल मोड. ओके, एंड just do only one change, which is data type is equal to user. Now यहाँ से let us take the thing. For example, external name है. Let us make this stop travel from one travel to. Okay, so before that let me create a pick list. Okay, तो फिर assign नहीं कर पाओगे ना. पिक लिस्ट सेंटर. सो यहाँ पे आपको पिक लिस्ट का भी रिवीजन हो जा रहा है. हाउ टू क्रिएट पिक लिस्ट. सो जस्ट एड इट. पिक लिस्ट में मैं लिखूंगा ट्रैवल लिस्ट समथिंग लाइक दैट. ARPA अर्पण नेम अर्पण ट्रैवल लिस्ट. ओके, list and then I'm saving it. So इसमें 3-4 जो हम क्या क्या फील्ड्स बोले थे. वन इज हैदराबाद. ओके, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली. हैदराबाद, ये कोड भी हैदराबाद लिख दो. ओके, नेक्स्ट पुणे. पुणे and Delhi. then next is Delhi. Mumbai. And next, yes, Mumbai. Then already it is saved. So now I'll be going here. I don't think so इधर पिक लिस्ट आएगी मेरी. उसके लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा. रिफ्रेश करना पड़ेगा. Travel request.
Effective dating will be basic. Basic. Yes. API visibility editable. MDF delete history. Here label जो यूजर को दिखाई देता है, this is this lab travel request. And then these are fine. Pending data, सब workflow से related है. This I'll be maintaining generic object and then mention this as user. Yes. अब we are not, जो default codes है, we are not changing that code. सिर्फ details में जाके travel from बोल के label को change करना है. That's it. Okay. Label travel from mention करके pick list भी assign करना है ना. कहाँ पे करेंगे वो? Data type pick list. पिक लिस्ट का वैलिड वैल्यू सोर्स, उसका कोड क्या है पिक लिस्ट का? दिस इज वैलिड वैल्यू सोर्स इज नथिंग बट कोड. ओके, सो पिक लिस्ट का कोड क्या है? This is the code, right? Travel list Arpan. Yes. So where you have to keep it here. Okay. And then label का नाम change कर दिया हम लोग. Perfect. So एक field तो हो गया. Then done. Next field. ये start date. या स्टार्ट डेट को डेट ही रख लेते हैं. इसको डेट ही रख लेते हैं. इसको क्या क्या लगाएंगे इसको? फॉर एग्जांपल ये तो डेट फॉर्मेट में ही है ना, तो इसको डेट ही रख लेते हैं. तो ट्रैवल स्टार्ट डेट लगा देंगे इसको. ओके. ट्रैवल स्टार्ट डेट. ये ट्रैवल फ्रॉम है ना, ट्रैवल टू भी लगाना है ना, तो यहाँ पे कस्टम आ जाएगा ट्रैवल अंडरस्कोर टू. ओके. इसको चाहे तो ऊपर मूव कर लो इसके नीचे. 128. Then यहाँ पे data type pick list same. And here what is the pick list name? This one, right? Travel list Arpan. Yes. So this is our pick list ID. Done. So effective this ये तो हो गया travel start date. Now next is travel end date. Okay. Okay. Date में जाके just a second. Data type date दिए and then यहाँ पे I will be telling travel end date. Okay. Got it?
और क्या है, Yes, अटैचमेंट sir. है ना, Attachment. Proof attachment. अटैचमेंट। तो इसको भी कुछ भी डाल दो, 128 समथिंग लेंथ। तो यहाँ पे इट इज अटैचमेंट, डाटा टाइप विल बी अटैचमेंट। ओके, Okay. attach something label name डाल दो। ओके, as per the requirement। and then secured में you have to categorize it, remember as this is an MDF object, I'll be mentioning MDF foundation object, there you have to go and give permissions, right? Right. It is created. Now where to go and give permissions? Right now if I go to manage data, will it be able to show me? अगर मैं मैनेज डाटा में गया तो वो दिखाई देगा? मैनेज डेटा में, मैनेज डाटा में आपको देखना है ना ट्रैवल रिक्वेस्ट सबसे पहले। DF ऑब्जेक्ट विल बी सीइंग इन मैनेज डाटा ना, वो बात का बात है एम्प्लॉय फाइल में लेके आना, पहले मैनेज डाटा में दिखना है ना। It is not showing, so you have to go and give permissions. Where you will be going and giving permissions in permission roles. I am into system admin training because I know you are also in system admin training. पूरे जितने भी demos के है system admin training. Okay. Okay. I'll be selecting for MDF. Yeah, MDF foundation. Okay. यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, क्या नाम था उसका, ट्रैवल। गॉट इट, ट्रैवल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको परमिशंस देना है एंड देन सेव इट। ओके, यहाँ पे सेकेंड स्टेप इज गिविंग परमिशंस। ओके, स्टेप 3 से इम्पोर्टेंट थोड़ा, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। दिख रहा है अब? दिख रहा है। दिस इज द अटैचमेंट, ट्रैवल फॉर्म आ गया, आ गया सर। ट्रैवल टू। सो स्टेप 3 से हम लोग, अब ये दूसरी क्लास है, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल कर लेते हैं। जब तक यहाँ तक प्रैक्टिस करो आप, जस्ट लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। स्टेप 3 विल बी स्टार्टिंग टुमारो। टुमारो इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा हम लोग उधर एम्प्लॉय फाइल में लिंक करेंगे। ओके ओके सर। ओके देन चलो, ओके सर, बाय बाय। बाय।